because we will be thrown out from here, and also people need to leave. Can this system be on? Put it off. But anyhow, maybe Subhas can start. Loud. How's your voice? Yeah, now it's. My name is Subhash Lumte. I'm working with unorganized sector workers from urban and rural area. I'm coordinating. I'm also a coordinator at national level, National Campaign Committee for Rural Workers, and associated with a small political party, Samajwadi Jan Parishad. I will be more comfortable in Hindi, so you will forgive me. एक तो इकोलॉजिकल डेमोक्रेसी के तरफ मैं इस ढंग से देखता हूँ कि हमारे प्लैनेट पर जितने भी लोग हैं उनको अपने अपने जिंदगी जीने का अधिकार है, और उस दृष्टि से जब हम प्लैनेट की जब बात करते हैं तो प्लैनेट पर के सब लोगों का भी वो जिंदगी जीने का अधिकार हम मान्य करते हैं। मगर आज जिन सवालों को के लिए या सवालों से जूझ रहे हैं वो उससे या जो लोगों के विचारधारा की वजह से ये सवाल खड़े हो रहे हैं, उससे ना कोई भी बच नहीं पा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा, ये विचारधारा की वजह से 10-15% लोगों का भी उनकी जो बेसिक नीड्स है वो फुलफिल नहीं हो रही है। हमारे देश के स्तर पर भी देखें या ग्लोबल लेवल पर देखें, दुनिया के स्तर पर देखें, मगर वो एक विकास का पैराडाइम है और उसके लिए हमको उसके जूझने के लिए और वो क्या है ये समझने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इकोलॉजिकल डेमोक्रेसी जैसे प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, और वो ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं में समझ बढ़े इसलिए काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने अपने मर्यादित दायरे में उनकी अपनी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो जाए, अलग अलग राज्यों में भी जाए। उसके लिए वो लिटरेचर भी अलग अलग भाषाओं में तैयार होने की जरूरत मैं मानता हूँ। पर बेसिकली ये सब जो चीजें करना चाहिए कि यहाँ पर जिनको एक सत्ता की राजनीति करने वाले लोगों ने सही बोले तो ये सब सवालों पर सोचने की आवश्यकता है, मगर आज की स्थिति में कोई पॉलिटिकल पार्टी उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं महसूस करती, और वो एक बहुत बड़ा चुनौती है। और ये जो सत्ताधारी वर्ग है उनकी एक बहुत बड़ी ताकत भी है। एक तो जिनको समाज में बदलाव लाना है उनकी इन सब मुद्दों के बारे में समझ कम है, इन मुद्दों पर वो काम ही नहीं कर रहे हैं, और फिर ज्यादा से ज्यादा आ जाकर मुद्दा आ जाता है कि सत्ता बदलाव का, जो 20 सालों में हमने देखा है कि लगभग सभी दल नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर सत्ता में आ गए, मगर उनका कोई बदलाव के बारे में कोई खास अलग कोई विचार है ऐसा महसूस नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म जितने भी काम कर रहे होंगे उनमें भी एक आपस में मेल होने की आवश्यकता है, और
उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तो कैसा ये पहुंचे, इसके बारे में सोचने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। मगर उसके लिए जैसा आज सौम्या जी ने जो बातें यहाँ पर रखी, या 2-3 दिन से जो बातें चल रही है, वो मुद्दे आज मुझे दिखता है कि बहुत सारी कार्यकर्ताओं के सामने ये मुद्दे ही है नहीं। तो उस दृष्टि से इन सब मुद्दों की तरफ देखना चाहिए और इस प्लेटफॉर्म को उस दृष्टि से विकसित होने की आवश्यकता मुझे महसूस होती है। धन्यवाद। Subhash Lodhi, I think ecological democracy is necessary because the majority of people have lost their right to live with dignity, and the issues that we are confronting today are the issues of a larger majority. And he says the political discourse, it needs to be taken to the level of political discourse, because those who are assigned the job of bringing about change, they are not necessarily aware of these issues, and those who are aware of these issues are need to go to these political discourses and to get these issues into the political economy of the nation to be able to bring about that desired change. I introduced myself yesterday also. I'm Colonel Devendra Sherawat. I'm working with Delhi Gramin Samaj. This is an organization which looks after the interest of about 360 villages of Delhi. I also work with another organization which is Kisan Mahasangh, a federation of over 35 farmers organization. And in a small way, I have worked with the India Against Corruption also. Now, democracy in our country presently is can be easily summarized as a football match going on while the commentary of cricket is being announced. That is the democracy which is prevailing in this country. We have about 283 laws which are in the 9th schedule. The 9th schedule was started in 1951. It was included in the constitution so that certain laws could be put beyond the purview of judicial review, basically the land laws, with the aim of socialistic ideals of redistribution of the land. And today, we have reached a stage that the Urban Land Ceiling Amendment Acts have been passed so that individual or companies can amass thousands of acres of land in their own name. So that is the cycle that we have, the democracy has gone through. And 1991, the process of liberalization had started. And those people have been able to get the land laws amended within a period of 20 years. The SEZ Act has been passed with a provision that 75% of the land can be used for non-industrial purpose, which happens in many cases. So the democracy today, unfortunately, is at a stage where the government is acting as a facilitator in transferring assets from individuals and society, the common people, to the rich and those who are who have the power. So that's the issue. So why has this democracy and ecology? What is the need of democracy in ecology? I've said something like this earlier also. Gandhi had said that there is a limit to self-indulgence, but there is no limit to self-denial. I wish some of us could follow that principle today, because what is happening today is that there seems to be no limit of self-indulgence. That is the society that we are living in today, and the farmers are facing the biggest brunt. The largest group of people are facing the biggest brunt, and that too because touching the lowest level of strata is not in. So the slum dweller or the person on the street may get the Supreme Court to give a judgment that their housing rights will be respected, and those from the payments will not be moved out till such time that alternate housing is provided to them. But a farmer whose land has been acquired for urbanization will lose his land on the roadside for widening of the road without the courts blinking an eyelid.
That is the state of the judiciary. The judiciary till 2 years back has said that the Yamuna Expressway is an urgent requirement and the land can be handed over to a private party for commercial development. And the sovereignty, that is another. I mean, this is a global phenomenon. We all say that the land and the resources, eminent domain, the principle of eminent domain, Rashtra ki Samprabhuta. That question has to be now addressed. We have to recheck this principle because the state has started outsourcing itself. Once the state has started outsourcing itself, then we have to go back to Gandhi, who had said that the ecological rights start with the individual in concentric circles. The village is the next custodian, thereafter is the town and then the country. So therefore the Gram Sabha land, which people had contributed after agriculture for common activities, the Gram Sabha land or the common land was contributed by the people from their own private land. And Delhi is a classic case of urbanization gone haywire. You study the villages of Delhi and you will find what is wrong with the urbanization process in Delhi. The villages have turned into slums. The common land has been taken away by the government. There is not a single tree around because the Gram Sabha land has been taken by the government. I have lodged a PIL. I am in process of putting in a PIL or questioning this entire process. So there is a huge amount of issue in all this. I can talk about it for a long time, but I think I have said enough to draw attention to it. Thank you. Thank you. Chair, through chair, can I request everyone, it's not for Suman, everyone to be brief, because we still have 2 chairpersons' remarks and a brief presentation on dialogue and 8 people still to say. At least then. Yeah. नहीं, इनको बोलने दीजिए. And maybe you can translate. I mean, सुमन. whatever Hindi. Yeah, please, you have the floor. सभी को छत्तीसगढ़ से जोहार। मैं सुमन परिवर्तन कांकेर छत्तीसगढ़ से हूँ और अभी सीएमओ फाउंडेशन की ओर से शिल्पा और मार्को के माध्यम से जो आज की मीटिंग कल की मीटिंग हुआ उसमें आने का मौका मिला सुनने को। मैं 1-2 बात कहना चाहती हूँ। तो कल से जो चर्चा हो रही है ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, तो मुझे लग रहा है सब की बातें सुनकर सभी जगह वही समस्याएं हैं और हम चर्चा में लास्ट में वही आ रहा है कि ग्लोबल एग्रीकल्चर के ऊपर। तो मैं एक बात कहना चाह रही हूँ जो शिक्षा के ऊपर है। छत्तीसगढ़ में कांकेर जिला 1 नंबर शिक्षा के नाम में 1 नंबर में है। हमारी राज्य सरकार बोल रही है, लेकिन जो अंदर जमीनी स्तर पे अंदर एरिया में हम जाके देखें तो उस जगह में टीचर एक स्कूल में 30-35 बच्चा में 2 टीचर होना चाहिए। उस स्कूल में एक टीचर दिया गया है और वो टीचर को 10 ठो काम सौंप दिया गया है जिसमें बच्चे लोग की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। और आज वो उस स्थिति में बच्चे लोग को पढ़ाई चपरासी पढ़ा रहे हैं या तो गांव की ऐसी जो 8वीं 9वीं पास कर वो बच्चे पढ़ा रहे हैं। ये आज वहाँ की शिक्षा की स्थिति है छत्तीसगढ़ कांकेर जिला के जो कांकेर जिला से 30-40 किलोमीटर अंदर दूर की बात है और जो उस जिला को नंबर 1 में पढ़ाई के नाम में दिया गया है हमारी राज्य सरकार। तो ये भी एक बहुत बड़ी मुद्दा है। और पर्यावरण की हम बात करें, ग्लोबल वार्मिंग पर्यावरण की हम बात करें तो फिर गांव में
पूर्वजों से हमेशा उस जल जंगल जमीन की जो रखवाली जो उसको अपना माँ बाप मानते आ रहे हैं, गांव की जो स्थानीय लोग, उसको आज बड़े बड़े कंपनियां, उद्योगपति ये सब पर्यावरण को दूषित करने में लगे हुए हैं। और हम इसके ऊपर अगर एकदम गहराई से सोचे तो इसका पर्यावरण को दूषित करने वाले तो यही सब बढ़िया करोड़पति उद्योगपति जो दिल्ली में बैठे हुए लोग, बड़े बड़े कंपनी टाटा के लोग हैं, यही लोग हैं। तो हम अभी अनिल भाई जो बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक के संबंध में, स्वाभाविक है गांव में जो इलेक्ट्रॉनिक कभी हम देखे नहीं है, हम तो पैसे जगह में हम कभी बैठे नहीं। I think she has not been properly briefed. Can I translate her about the theme of right now? Yeah. Yeah. सुमन जी, अभी एक तो एक पर्यावरणीय स्वराज क्या है, इस पे हमारी समझ 2-3 वाक्यों में कहनी है। और दूसरा ये कि ये जो मूल्यांकन, सुबह जो अपन ब्रेकफास्ट में बात कर रहे थे, नाश्ते में, सैडेड की सीमा संभावना, उस पर जितना आप कहना चाहें, वो ज़रूरी नहीं है कि सब बात कहें, जितनी आप कहना चाहें वो कर दी। मूल्यांकन वाली और पर्यावरणीय स्वराज क्या है। हमने सीमम फाउंडेशन की जो मूल्यांकन थी में हमने जो 3 तारीख से अभी तक जो लगातार मीटिंग में हैं, गांव में जो हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि जो लोग से चर्चा से निकल के आ रहा है, और हम खुद गांव में लोग से चर्चा कर रहे हैं साडेट के साथ। साडेट जो एग्रीकल्चर है, ये सब ग्लोबल वार्मिंग है, जो संवाद की बात कर रहे हैं, अच्छा है कर रहा है। और इसके साथ साथ जो व्यापक रूप से संवाद कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। मैं इसके लिए साडेट को भी बहुत धन्यवाद देना चाह रही हूँ। और 2 दिन के बाद मैं ये सब इतना समझ नहीं पाई, लेकिन जो मेरा देखी और जो अनुभव है, बहुत उसका व्यापक रूप है साडेट का। और ऐसी जो संगठन साडेट जैसे साडेट जो एक संगठन है, वैसी और अलग अलग संस्था के संगठन को जो साडेट काम कर रही है, वैसे और बड़े रूप में व्यापक रूप में करना चाहिए। धन्यवाद। इसके काम को बेहतर कैसे कर सकते हैं, इस पे अभी कोई सुझाव है? Suman comes from Kanker in Chhattisgarh, and she started by talking about issues that have been discussed since yesterday about global warming, agriculture and so on, and wanted to add another issue, which was of education in the public system and children, even where the government claims it is doing education, that not happening adequately in her area, despite all claims by the government. It's at that point that Vijay pointed out what the discussion today was expected to be at this point, and to which she said that she's been now here from the second and third she's been to Uttarakhand and seen part of that, and then the discussions here. She is still in the process of understanding SADED's work, but what she has observed is that there is very wide range of issues of discussion in the dialogue, and she feels it should happen at a larger level. I am Rajendra Prasad, coming from Tamil Nadu, representing Tamil Nadu Coating. Is one of the other corporations of Cement Foundation in southern part of Tamil Nadu. And also I am
representing a people's movement called Coastal People's Federation, which is one of the movements anchoring the Kudambalam nuclear power struggle. So I'm also part of it. And about SADD, I think any decisions or any solutions or any initiative comes, out of a dialogue or discussion, and it's a space for people to put their perceptions and also ideas and scientific reasons, facts and figures and all that. It really helps the people to understand. And also ecological democracy, I feel it is a sort of a spiritual factor, because those days people were making decisions based on their values and sort of culture. Now that has been eroded from the mind of the people, and the decisions are made at the centralized and policy level. People are making it bureaucratic, and nobody consults the people, what is their value and things like that. But it's a forum where we can also share people's values and traditions. So I don't mean every tradition is good, but there are very good ecological sensitive traditions and culture among the people, which has been sort of forgotten. So this is a forum where also that is discussed. And also to sensitize the urban people and the elite people and the educated people and the academicians, through publications. It is helping them to understand, though they do not have or lack the social consciousness. So it is the forum where also help the intellectuals, conventional intellectuals to understand the issues at the grassroots level. And other part of the SADD, what I understand is it sensitize people and also promote struggle. That is the ultimate goal of this this whole initiative, I feel. And also, the agriculture and the other ecosystem is being sort of discussed more in SADD's dialogues. But I also feel that even the coastal ecology and coastal ecosystem is very important, where most of the development projects and unethical projects are being proposed. And I feel that also, if it could be dialogued and discussed and take it forward. And also it's a think tank, idea tank. I feel, because when we were negotiating with the government about the nuclear power station in Kudambalam, and we lacked the technical knowledge and the scientific knowledge. So we had to form a group of people who are intellectual, who are science background. They had marine biologists, nuclear scientists, and even the retired bureaucrats like IAS officers. And we have a committee now which debate with the government. So I feel this initiative is such initiative where we can also debate with the policymakers, debate with the scientists, and debate by with the government officials and things like that. It is a good forum, I feel. But one suggestion is, as somebody said, women activists should be included, I feel. And also consciously we need to see, and consciously we need to track how this effect is being trickled down at the grassroots level, or how it is reaching the last man in the society, or how we can put the last person as first one. That is it. मैं मोहम्मद जाहिद बिहार से आता हूँ। पहले भागलपुर जिला में रहता था, इन दिनों नालंदा जिला के बिहार शरीफ में रह रहा हूँ। 74 बिहार आंदोलन में शामिल रहा। उसी दौरान बोध गया भूमि मुक्ति संघर्ष में भी शामिल रहा। बाद को भागलपुर में सुल्तानगंज से फिर 35-80 किलोमीटर पर
एम्परर शाहजहां से गंगा पर जमींदारी आ रही थी, भागलपुर के महासे महेश नाथ घोष और मुर्शिदाबाद के मुशर्रफ हुसैन की परमानी की जमींदारी थी, उसके खिलाफ लड़ा। उसके बाद बुनकरों को संगठित किया, बुनकर तहरीक बनाया, बुनकरों की आवाज के लिए लड़ रहा हूँ। मेरा मानना है कि बुनकर के साथ जितने ग्रामीण दस्तकार हैं उनको भी संगठित होना चाहिए, संगठित किया जाना चाहिए। संघर्ष के दौरान ये महसूस हुआ कि देख रहे हैं कि किसान अलग लड़ाई लड़ता है, बुनकर अलग लड़ेगा, आदिवासी अलग लड़ेगा, क्यों नहीं? हलवाहा जुलाहा कुलाहा मलाहा, हलवाहा किसान, जुलाहा बुनकर, मलाहा फिशरमैन और कुलाहा आदिवासी। ये अगर मिल करके लड़ेगा तो शायद हम अल्टरनेट भी दे सकेंगे और समस्या का समाधान जल्दी होगा। बिहार शरीफ में इन दिनों बुनकर मजदूर, बीड़ी मजदूरों को भी संगठित किया हूँ। कॉमनर हारमोनी सांप्रदायिक सद्भाव बने, इसके प्रति भी समर्पित हूँ और काम कर रहा हूँ। मुस्लिम कॉज के लिए भी लड़ता हूँ। मेरा मानना है कि मुस्लिम कम्युनिटी को मेन स्ट्रीम में आना चाहिए, उसके लिए हमारी कोशिशें होती हैं। मुसलमानों में आप लोग जानते होंगे ट्रस्ट औकाफ होता है। मुस्लिम समाज के भाई अगली मीटिंग यहाँ बड़े आदमी की है जो अपने को निकाल देंगे आके, तो आप सिर्फ इकोलॉजिकल स्वराज पे बोलें। मेरा इतना ही। उसके बाद अब इकोलॉजिकल डेमोक्रेसी के बारे में बचपन में मदरसे में पढ़ा था कि ये कायनात 4 हिस्से में बट के मिल के बना है। नबातात, जंगल और पानी, जमादात माइंस, हैवानात एनिमल्स एंड बर्ड्स, इंसानात आदमी। तो एज आई थिंक दैट इज इकोलॉजी। डेमोक्रेसी सीधा मानते हैं जब तक अनुभव है, किसी के हक हुकूक की पामाली न हो, सभी का समान, सभी को समान हक मिले, न्याय मिले। तो इकोलॉजिकल डेमोक्रेसी का मतलब एक लाइन में मैं यही समझता हूं कि ये जो बनावट है इकोलॉजी का, किसी का दोहन न हो, किसी का शोषण न हो। सैडेड विजय प्रताप जी से 77 से वास्ता है। बिहार में सैडेड के, हरित स्वराज के जितना भी मीटिंग हुआ है मैं सब में शामिल रहा हूँ। सैडेड के इस तरह के कार्यक्रमों में आकर ऊर्जा मिलती है। सुझाव हमारा यह है कि जो एक्टिविस्ट हैं उनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए और भी मदद दिया जाना चाहिए। शुक्रिया। Yeah, we have been pressed with time, so we don't take translators. If Rito can make notes and then recall them at some stage. Okay, please. Go on. अपना बस नाम भर बताइए, पुराना परिचय हो चुका, और फिर सैडेड और इकोलॉजिकल स्वराज पे अपनी राय। 2 minutes. मैं कामता प्रताप मुजफ्फरपुर से आता हूँ और मैंने पिछले दिनों किसानों के साथ काम किया है। उसमें मधुमक्खी पालक, लीची किसान और सब्जी उत्पादक, इनके साथ पिछले 10 वर्षों का अनुभव है। लेकिन सैडेड के बारे में तो मैं कल यहाँ सेमिनार में भाग लिया और आज सेमिनार में भाग लिया, जिसमें श्रीधरन, अजय झा जी और सौम्या दत्ता को सुना। सैडेड के बारे में मैं विशेष कुछ जानता नहीं हूँ, जो यहाँ हमने देखा है। आगे हम समय निकाल कर इसको अध्ययन करेंगे और अगर हमारी आवश्यकता सैडेड को होगी तो मैं दूंगा। इसी के साथ धन्यवाद। I must say, I'll just make a few clarification on what Rajendra said, that about coastal ecology. I think SADED is also somewhere involved in coastal ecology issue because the POSCO plant is coming on the coast. And whatever publication we have done on behalf of SADED, we have made a critique of the POSCO plant, where we also have tried to show how the POSCO plant is going to affect the livelihood of the fishermen and also coastal ecology as such. Now, regarding ecological democracy, etc., I think we have had lots of discussion on ecology democracy, various dimensions, climate change, agriculture, etc., etc. But if you are heading for a solution, I mean, there cannot be any solution
final solution in the world, in any system, but if you are very serious about the issue, people who are fighting for these values, I think today there are resistance movements who are fighting against destructive projects. SADET should interact more with them and try, as he said, that we should give inputs. We have been trying to give some kind of inputs to Vedanta and POSCO area, but we should increase this. Like, we are also involved in the anti-nuclear movements. Personally, we are very intensely involved with the Fatehawad movement. In future, we should try to develop capacities. At least as a think tank, we can give them research work and support work to various resistance movement. I think that would be a fruitful effort. जो पूरा इकोलॉजी डेवलपमेंट है पूरा, इसमें मानव और पूरा जो नेचर कुदरत या जीव मात्र का बैलेंस वाला संतुलित रिश्ता बनना चाहिए। जो जाहिद भाई ने बोला कि हम उसका दोहन शोषण जो है पूरा, और जो तो डेवलपमेंट जो विकास है वो किस तरह का होगा। साथ साथ जो पहले दिन रहा, करामत भाई जो आए थे, साउथ एशिया का जो जॉइंट यूनियन कहिए, कुछ भी ट्रांसपोर्ट या वहाँ की जो आपस में जब तक ये बड़ा एक भाईचारा वाला रिश्ता नहीं डाला हो पाता, ट्रांसपोर्ट है पूरा ना, जो हथियार इस पर खर्च कर रहे हैं पूरा, यानी इस पॉलिटिक्स में हमारा कोई एक बड़ा रोल नहीं होगा, तो मैं समझता हूँ इकोलॉजी डेमोक्रेसी में भी हमको ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। पॉलिटिक्स में जब तक हम अपने बड़ा दबाव प्रेशर नहीं बना पाएंगे। मेरा नाम रीता कुमारी है, मैं बिहार के रहने वाली हूँ। दिल्ली में सैडेट से जुड़ करके 3 साल से काम करती हूँ। प्रवासी जनमंच के बीच लोगों का जो समस्या होता है, तो उसमें मैं सरकार की नीति क्या है, लोगों की व्यवस्था क्या है, उसमें मैं भागीदारी होती हूँ। हमसे क्या हो सकता है और सैडेट से क्या हो सकता है। मुझे सैडेट की एक बात का मुझे बहुत अच्छा लगा, ये संवाद ही नहीं करते, मेरे हिसाब से बहुत कुछ करते हैं, और संवाद तो होना ही चाहिए, क्योंकि आजकल औलाद भी या माँ बाप भी ये नहीं पूछता है जो आप कैसे हो और क्या कर रहे हो, लेकिन सैडेट ने ये संवाद करते आप कैसे हैं और हम आपके दुख सुख में कैसे साथ देंगे। इस पर मैं हम प्रवासी लोगों के बीच जा करके जन जन तक एक घर में जा करके उनको मैं पूछती हूँ जो आपको हमसे क्या चाहिए, सरकार की नीति में क्या मैं आपकी क्या भागीदारी हो सकती हूँ। तो व्यक्तिगत भी और सैडेट के तरफ से भी मैं जाती हूँ। दूसरी बात ये, मेरा एक बात समझ में मुझे ये मेरी व्यक्तिगत है, मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, जो बिहार में जुड़ शीतल, मैंने हर जगह जुड़ शीतल होता है, अब जुड़ शीतल कौन महीना में होता है ये नहीं पता, हाँ अप्रैल में, तो वहाँ पर मैं 5 जून को हम लोग वृक्षारोपण करते थे। तो अपना जमीन जिसको नहीं होता था तो नदी के किनारे में भी जा करके 5 पेड़ में लगाना, 5 पेड़ को लगाना है। कहते थे कि जो 5 पेड़ लगाएंगे तो जलावन का भी काम होगा और कोई धूप से आएंगे तो छां का भी काम होगा। तो मेरा ये कहना है, बिहार में जा करके सैडेट का जो संगठन है और ग्रुप है, तो वो एक लक्ष्य बना ले, जो बड़े बड़े टेक्नोलॉजी जो भी है प्रदूषण जितना फैला सके, लेकिन हमारी जमीनी स्तर पर में हमसे जो बन सके, साल में 1-5 पौधा तो लगाना ही है। बेशक मुझे जमीन अपनी है या नहीं है, किसी का भी और जमीन है तो उस पर में जब 5 पेड़ लगाएंगे और आवाज दे करके कहेंगे जो आज समय की यही पुकार, बच्चे दो और वृक्ष हजार। बच्चा इसलिए दो जो गांव के लोगों की मानसिकता जो मुझे बेटा होना चाहिए, तो एक लड़का और एक लड़की होना चाहिए, तो बच्चा 2 ही पैदा करेंगे, वृक्ष 1000 लगा सके जितना भी संख्या में हो। तो मैं यही बात करके Myself, Dr. Anil Thakur, I am teaching political science, one of the college of Delhi University, and I am associated with SADET last 6-7 years. I am one of the coordination committee member of the SADET, and I am also associated with socialist movement, and I am working on organic farming. That is the basic issues of organic issues, that is the
productions and marketing for proper environmental and health issues. That is the, and rest of the things I will discuss later on. Thank you. असल में थोड़ी बातें छूट गई थी, 2 मिनट में मैं कहना चाहूँगा। हम लोगों ने विजय प्रताप जी के निर्देशन में बिहार गोपालगंज जो गंडक नदी का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हम लोगों ने वहाँ के लोगों में एक परिसंवाद आयोजित किया था। और हम महसूस करते हैं कि जलवायु परिवर्तन से जो विस्थापन की समस्या नदियों के द्वारा जो उत्पन्न हुई है, अगर उसके समाधान के लिए हमको कुछ काम करना है तो हम आम आदमी से जुड़ के ये बता सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन के चलते ही आज नदियों की जो संस्कृति है वो बदल रही है, जिससे बाढ़, सुखाड़, अन्य तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। मुझे लगता है कि हमें नदी के आक्रामक स्वभाव को भी नदी क्षेत्र के लोगों से बताना होगा और बताना होगा कि इसकी आक्रामकता इसलिए है कि जलवायु परिवर्तन कर रहा है। धन्यवाद। The other chair should invite there. Valuable input from the House. Just a few words on the issue of sacred and ecological democracy. I think when the world, for that matter India included, is fighting for participatory democracy within the parliamentary democracy system, to be able to raise the flag of ecological democracy for these many years is in fact commendable, though ambitious. I think it is not very properly defined as to what ecological democracy may mean, but I think this gives you an open space for the participants to interpret it the way they feel like. So to that extent, I think this is playing a role, and a role in which there is space and scope for people to locate themselves and also to interpret the way they would like to interpret their own life and the influence their life has on others, as well as the influence the others are making on themselves. So within that context, I think it makes sense. But I think we should not take ecological democracy as a very serious term. It's a very loosely defined term, and yet it carries with it a lot of weight in terms of, conceptually it needs to be defined and redefined. You need to be working on it all the time. And I'm so happy that I came to say that after about 5 years of gap, and it is still there with the same agenda of ecological democracy. And I believe the time for ecological democracy is now. But how do we locate it within the parliamentary system of democracy? Within other multi-layered issues within that is a challenge, and I think it's a matter of time. It's a part of process rather than a product. So if it is considered as a part of a process, then I think ecological democracy is definitely something which is meaningful as a process. What product it finally emerges is something which will be for the future to decide. That's it. Thank you. Okay. Time is up. So I think I'll just thank. I feel again privileged to have been part of. But you should say something as chair. Huh? 2-3 minutes before they throw us out. I start with thanks. Part of privilege to be part of the group with so much dedication and struggle behind them and forward-looking agenda. On ecological democracy, then I have been somehow part of the discussions of the sort of what we call the comprehensive democracy agenda, whereby we meaning groups from India and Finland and some Sweden and some Nepal, and they have been trying to create some kind of our response to the combined crisis. Because sometimes it happens that we are so immersed in struggle and resistance that we forget to think, if we had to say, how would the world be organized? So at least to me, this has been a very important platform
to work out those ideas. What is it? What is our better alternative to this rather disastrous system, which I call fossil capitalism. And within that, this ecological democracy is sort of one field of work, but not the only one. And within this kind of framework of comprehensive democracy, where we also use the slogan "Vasudhaiva Kutumbakam," then it creates, like maybe should have said space for a whole lot of activities, intervention campaigns, dialogues, and so on. And this SADED, in a way, is one institutionalization of this ongoing journey, where the Semenpuu Foundation plays important role. And I have a good number of complaints and the way which it works, maybe some suggestions, but I will have the opportunity to bring them up in the coming 30 or so hours that I'm still in Delhi, so I leave them there. Thank you. Privately? Not privately. Some collectively. Some publicly, some here only. Couple of them. Couple of them. I insist that Vijay is very passionate about documenting things. So I think through SADET there's a whole bunch of transcripts and manuscripts and Pandulipi and I think that's also must be meaningful. But then from the, let's say, movement angle or from the wider angle, then sharing should maybe be a bit higher priority. The archival work could be given a bit relaxation. So from archiving to sharing would be one proposal. The shifting of the emphasis. Maybe that's enough.